Hello everyone, I am Sunil. Welcome to my channel Sunil's Current Affair. तो बहुत दिन ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ASO ଉପରେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ASO ର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ର ASO ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ବି ଅଲରେଡି 20 ଜାନୁଆରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଚାଲିଥିବ। तो बहुत दिन पर मु वीडियो आनी तार रीजन हूँ मुझे भी गोटे स्टूडेंट एंड मुझे निजे कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर हो लाइक बैंक एग्जाम एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। तो से बहुत दिन गैप पर मुझे सेसन टा नहीं आसी। तो जमती कि आपण मैंने जानते आधे आमर जिके रोचे ओडिशा एसो आमर जनरल नॉलेज रहा सहित मैथमेटिक्स रोचे एंड रीजनिंग रोचे इंग्लिश ओडिया रोचे एंड जब फर्स्ट राउंड आप क्लीयर कर तापर आपण स्किल टेस्ट रोचे कंप्यूटर जोटा कि क्वालिफाइंग इन नेचर रोचे ओके। तो आज आज सेसन मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे किछटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसी। फर्स्ट पार्ट रहिबो सेकंड पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे आउ किछि मु भी नहीं आसीबे आपण मानक पई क्वेश्चन एंड मु ऑलरेडी पूर्व इंडियन पॉलिटी उपरे भी दीटा सेशन करिछि एंड तार वीडियो भी अच्छी जदि आपण मैंने देखी ना ताले मु ऊपर लिंक दे दूची आपण मैंने सेठी क्लिक करके भी देखि पारिबे ओके। सेतरु भी किछटा क्वेश्चन पाई जिवे एंड प्लस आज जो क्लास हबो आतरे भी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। आई थिंक किछटा सिमिलर क्वेश्चन थाई पारे जंती नथिबा तो बेटर ओके। तो चलंतु बेसी गपियानी एंड स्टार्ट करिया आज सेशन। आई होप आप सब को प्रिपरेशन भलो चलथिबो ओके। तो जिबा फर्स्ट क्वेश्चन आडगु। तो ता पूर्व टिके देखि दियंतु जनरल अवेयरनेस रो जो डिटेल सिलेबस रही ओडिशा एसओ पे जोटा कि करंट नेशनल इवेंट देन करंट इंटरनेशनल इवेंट ओके नेशनल इंटरनेशनल इवेंट देन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल आउट रोचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि मुझे आनी आपण मान वीडियोटा। नेक्स्ट सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी देन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, role of civil service in democracy, Indian economy and issues relating to planning, growth, development and employment, poverty alleviation, resource mobilization and inflation, then defense and Indian armed force, then scientific invention and use of science in everyday life, issues of environmental ecology, biodiversity and climate change. Next, important national and international institutions, organization and fora and their structure, mandate etc. Okay, এটা पूरा syllabus रही ओडिशा सेक्रेटेरिएट एसओ ପାଇଁ जनरल अवेयरनेस रो क्लियर। तो आज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक 25 क्वेश्चन अच्छी। तो देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश ओके। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन रही सेटा अडॉप्टेड होची फंडामेंटल ड्यूटीज जो अच्छी सेटा अडॉप्टेड को कॉन्स्टिट्यूशन कहार कॉन्स्टिट्यूशन रो अडॉप्टेड होची ना आंसर होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूसिया क्लियर ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूसिया रूसिया कॉन्स्टिट्यूशन रु फंडामेंटल ड्यूटी जो रही हमर सेटा अडॉप्टेड होची। नेक्स्ट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पई फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड हेतला आंसर विल बी 10 ओके। आंसर होची 10 10 टा फंडामेंटल ड्यूटी फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड हेतला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। नेक्स्ट when fundamental duties were adopted or added in the constitution of India okay केबे को मसिया रे फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे ऐड हेतला आंसर विल बी 1976 ओके के भी घबरेयर नहीं आंसर होची 1976 क्लियर। नेक्स्ट at present how many fundamental duties are in the constitution of India okay constitution of India रे present एपे वर्तमान केतरा fundamental duties रही ना 11 fundamental duties okay। प्रथम थर जेतबे fundamental duties ऐड हेतला 10 थिला तो वर्तमान presently fundamental duties होची constitution of India रो केतरा ना 11 क्लियर। आई होप अपन समस्त माने बुझी पारथिबे। नेक्स्ट 11th fundamental duty was included into the Indian constitution in which year जो
प्रथमे 10टा थिला फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट एबे अछि 11th तो से 11th फंडामेंटल ड्यूटीज रा केबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे ऐड हेतिला को ईयर रे द आंसर विल बी 2002 ओके एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम मन पई एग्जाम रे बहुत तरह आछि एंड आसीबो भी मोस्ट प्रोबेबली ओके जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी एटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केबे ऐड हेतिला को ईयर रे इंक्लूड हेतिला ना 2002 नेक्स्ट in the Indian Constitution, fundamental duties are given in which article? Indian Constitution ने fundamental duties टा को article रे रही बा दिया article 51A clear okay article 51A next which committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution okay को committee advocate करथिला fundamental duty को Indian Constitution ने स्वरण सिंह कमिटी ओके स्वरण सिंह कमिटी क्लियर आउ थे कही दउची को कमिटी एडवोकेट करथिला फंडामेंटल ड्यूटी को इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वरण सिंह कमिटी नेक्स्ट Which constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between 6 to 14 years? को constitutional amendment act pass करथिला कोन ना चिल्ड्रेन कर एजुकेशन बिटवीन 6 टू 14 इयर 6 रु 14 वर्ष भीतर जो छोट पिला रहिसंती तांकर कंपलसरी एजुकेशन पई को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हेतला ना 86 ओके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके क्लियर important question एटा हमर एग्जाम पे तो 86th constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between 6 to 14 year clear next fundamental duties were inserted in the constitution by fundamental duties एटा inserted हेतला constitution by के who act रे ना 42nd amendment act clear 42nd amendment act clear समझ जानी पारथिबे फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर एंश्योर्ड इन कोथरे फंडामेंटल ड्यूटी एंश्योर्ड इज ना पार्ट आईबीए आर्टिकल 51ए ओके आर्टिकल 51ए रो पार्ट आईबीए रे नेक्स्ट Which constitutional amendment act added a new fundamental duty in part IBA okay को constitutional amendment act added हिची fundamental duty in part IBA रे ना 86th okay 86th constitutional amendment act added a new fundamental duty in part IBA okay तो I hope एती जाय आपण माने बुझी पारथिबे तो ता पूर्व आगो जीवा पूर्व जदि आपण माने चैनल नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करबे आ जदि भल लागुची ताले शेयर करिवे ए सेशन को ओके जीवा नेक्स्ट Which committee was constituted to identify the existence of legal provision for the implementation of some of the fundamental duties? को committee constituted to identify the existence of legal provision for the implementation of some of the fundamental duties? को committee थिला ना Burma committee clear Burma committee was constituted to identify the existence of legal provision for the implementation of some of the fundamental duties. Next, right under which article are not provided to foreigner? Okay, who article under rights are not provided to foreigner? Now, article 15. Okay, the most important question रहिबो exam पे article 15 under rights are not provided to foreigner. Okay, rights under article 15 are not provided to foreigner. Next, who has the authority to amend the fundamental rights of the citizen? Okay, कहा पाखे authority रही amend the fundamental right to of the citizen ना parliament पाखे रही clear parliament has the authority to amend the fundamental right of the citizen. Next, habeas corpus quo warranto are terms related to which of the following article? Okay, habeas corpus हो बा क्यू वारंटो ये जो टर्म गुडा रही है को आर्टिकल रे रही है आर्टिकल 32 ओके एटा भी हमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे रहइबो एग्जाम पे नेक्स्ट आर्टिकल 29 of the constitution of India grants which right? Article 29 of the constitution of India grant which right? The protection of interest of minority. Okay, को राइट्स एटा ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 रे अछि एटा क्लियर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज नेक्स्ट
Under which article of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of the armed forces be specially restricted? Okay, କୋଉ article ରେ ଆମର Constitution of India ର କୋଉ article ରେ fundamental right of the member of the armed force be specially restricted? ନା article 33. Okay, most important question ରହିବ ଆମର exam ପାଇଁ ଏଟା clear। ନିଶ୍ଚିତ ଆ ଭିତରୁ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯେହେତୁ ଜିକେ ଜେନେରାଲ ପାର୍ଟ ଆମର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ର ଏସୋ ର ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ତ ଆରି ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ କି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଦରୁ କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ, which article of the constitution abolishes untouchability? Okay, article 17, article 17 of the constitution abolishes untouchability, clear। Next, which article was referred to as the heart and soul of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar? Most important question ରହିବ ଏଟା, ବହୁତ ଥର exam ରେ ପଡିଛି। The constitution ର ଯୋଉ heart and soul ଏଟା କୋଉ article ର ରହିଛି? As by Dr. B.R. Ambedkar, ନା article 32, clear। Article 32 was referred to as the heart and soul of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Next, which fundamental right in the Indian Constitution prohibits trafficking, forced labor, and children working under 14 year of age? Right against exploitation. Okay, who fundamental right रे Indian Constitution ର କୋଉ fundamental right prohibits trafficking, forced labor, and children working under 14 year of age? Na right against exploitation. Clear? Next, by which constitution amendment has the right to property been scrapped as a fundamental right? The 44th. Clear? 44th Constitution Amendment Act has the right to property been scrapped as a fundamental right. Next. Okay, done। तो ଏଇଠି ଏତିକି ହିଁ क्वेश्चन थिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइक आई थिंक ये 25 to 30 क्वेश्चन अच्छी। एंड बाकी मु प्रीवियस वीडियो रे इंडियन पॉलिटी ऊपर दीटा क्लास नहीं तो तार भी से भी आप किसी क्वेश्चन पाइबे, तार लिंक मु ऊपर देदेवी, आप चैनल हेटू देखिपारे एंड डिस्क्रिप्शन में भी देदेवि तार लिंक देदेवी, क्लियर। एंड आई होप आपन को सेशन भल लगिथिबो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला निश्चित। आर भितर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेहेतु गोटे पार्ट रोचे जीके रो जनरल नॉलेज रो, तो निश्चित गोटे कि दुईटा क्वेश्चन दिमाग रो आसी पारे, आई थिंक आसब निश्चित। इंडियन सबुठ मिसमैच तो क्वेश्चन आसब, क्लियर। तो आई होप आपन को आज सेशन भल लगिथिबो। जदि चैनल ले नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, आ जदि चैनल वीडियोटा भल लागिछि ताले शेयर करंतु सांग मान सहित जो माने प्रिपेयर होचंती, क्लियर। एंड ओके ठीक अछि, आपण मान प्रिपरेशन सेमती भल चल रो। तो आज एतिकी, नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आउटे मु वीडियो नहीं के आसीबी। ओके, आउ किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाइक 25 to 30 क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर मिनिमम 50-60 क्वेश्चन इज एनफ, क्लियर। तो ठीक अछि, आज एतिकी। आई होप, टाटा, बाय।